हेलो दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कुछ दिनों से एंटरटेनमेंट वीडियोस मैं आपके लिए नहीं ला पा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि लॉकडाउन पीरियड है और आप घर बैठे बोर हो रहे होंगे। मैंने एंटरटेनमेंट वीडियोस का एक लाइनअप बनाया हुआ था और मेरे सारे वीडियोस वायरल जा रहे थे और मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट्स मेरे आंखों के सामने आए कि मेरा दिल दहल गया और मुझे लगा कि भाड़ में जाए मेरा चैनल का ग्रोथ। मुझे पहले ये इश्यूज़, ये जो प्रॉब्लम्स है फॉरेनर्स के यहाँ पे, वो मुझे सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया के गरीबों को लेके चिंतित नहीं हूँ, उनके लिए भी मेरा हमदर्दी उतना ही है। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में उनके बारे में बात किया जा रहा है और उनको हेल्प किया जा रहा है। लेकिन ये जो फॉरेनर्स का प्रॉब्लम है उसके बारे में बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और मुझे तो लगता है यूट्यूबर्स में से किसी ने भी इनके प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया है। और ये मुझे बात सबसे बुरा लग रहा है कि इतने सारे इंटरनेशनल ब्लॉगर्स हैं, मिथिलेश बैकपैकर, माउंटेन ट्रेकर, फिर यात्री डॉक्टर, जिनका चैनल का थीम ही यही है कि वो बाहर में जाते हैं और फिर दिखाते हैं, उनके हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इंडियंस को कितने अच्छी तरीके से ट्रीट किया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन आज जब फॉरेनर्स इंडिया में प्रॉब्लम में हैं तो उनके बारे में कोई भी व्लॉगर्स बात नहीं कर रहा है। मैं अकेला यूट्यूबर्स हूँ शायद जो इनके लिए एक स्टैंड ले रहा हूँ और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन इंटरनेशनल ब्लॉगर्स ने एक छोटा सा भी वीडियो बनाया होता कि ये वहम दिल से निकाल लो कि फॉरेनर है, वाइट स्किन है, मतलब वही कोरोना वायरस के कैरियर्स हैं और उनको होटल से फिर गेस्ट हाउस से मत निकालो। अगर उन्होंने से छोटा सा भी एक ऐसा वीडियो बनाया होता तो शायद उनका जो इतने बड़े सब्सक्राइबर बेस है उनमें से कोई ना कोई इनके लिए एक पॉजिटिव चेंजेस ला पाता। जैसे कुछ दिन पहले हमने उस लेडी तातियाना का भी हेल्प किया था हमने सब मिलके, और फिर कर्नाटका पुलिस ने भी मुझे और आप लोगों को पर्सनली थैंक्स कहा कि ये इशू उनके पास लाने के लिए और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली साउथ और कुछ कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनको देख के मुझे इंडियन होने पे गर्व हो रहा है और कितने अच्छी तरीके से वो फॉरेनर्स को मैनेज कर रहे हैं और ट्रीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश, जितने भी फॉरेनर्स हैं उन्होंने वीडियोस बनाए हैं कि वो बहुत ही सेटिस्फाइड है। Отлично. А вы здесь в отеле живете? Да, в гестхаусе. А у вас было такое, что вас из отеля выгоняли или просили покинуть? Нет? Все нормально? Да, нам наоборот владелец отеля сказал, что если напряженка с деньгами, можете платить меньше, не переживайте. О, вот это вам повезло. А вы видели, чтобы людей здесь палками били? Нет. Не слышали такого? Может, кто-то из Мы уже знакомых? второй день это обсуждаем. Мы читаем эти новости и просто в шоке от того, что происходит. Я не знаю, где это взялось. Наоборот. Даже полиция отношение- нормально относится к нам. Никто не гоняет, палками не замахивается. Разве что они местных могут погонять после часа. Ага. Вы в отеле здесь живете? Ну, йога-шрам, почти как отель. Да. Угу. А у вас было такое, что вас выгоняют Нет, у нас из-за очень шрама? дружелюбно, у нас все прекрасно. Мы пришли в последний день перед регистрацией, когда все это пришло, буквально нас зарегистрировали очень удачно. Очень красиво относятся, все супер. और जहाँ तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस टाइम पे अभी तक एक भी पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं ऋषिकेश में। सो दिस इज़ द प्रूफ दैट यू डोंट हैव टू बी मीन टू फॉरेनर्स टू कंट्रोल कोरोना वायरस। वो बहुत ही अवेयर है। एटीएम्स में भी जाते हैं तो वो हाथ में टॉयलेट पेपर मोड़ के फिर वो जो नॉब्स है वो प्रेस करते हैं। उनसे दूरियां बनाओ, उनको मास्क पहनने को कहो। वो अगर रूल ब्रेक करते हैं तो उतना ही सज़ा दो जितना इंडियंस को दे रहे हो। ये सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन उनके साथ बुरा बर्ताव ना करो। उनकी भी मजबूरी है, अगर वो रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि किस लिए ब्रेक कर रहे हैं। अगर 3 घंटे 4 घंटे जो टाइम है स्पेसिफिक, वहाँ पे इतने बड़े लाइन हैं कि उनको, जैसे कि गोवा में हो रहा है कि बहुत बड़ा लाइन है और जो इंडियंस लोकल्स है वो बिना लाइन दिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो एक साथ भर भर के ले जा रहे हैं। और जब तक टाइम ख़त्म हो रहा है तो कई सारे फॉरेनर्स को बहुत सारी चीज़ें मिल ही नहीं रहा है। तो घर में अगर भूखी बीवी हो और बच्चे हो तो उन्हें तो फिर निकलना ही पड़ेगा ना। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे देशों में सब कुछ ठीक है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वी इंडियंस बिलीव इन कर्मा एंड सेटिंग एन एग्जाम्पल। अगर हम आज आगे आके इन फॉरेनर्स की मदद करते हैं तो हो सकता है कि हमारे भाई बहन जो फॉरेन में हैं, कल अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी ही तरह आगे आके उनकी भी कोई मदद करेगा। एक रशियन लड़की ये भी कह रही थी कि ये जो होटल ओनर्स है और प्राइवेट हाउस ओनर्स है जो रेंट पे देते हैं फॉरेनर्स को हाउस, उनके पास सरकार की तरफ से एक बड़ा सा लेटर गया है कि प्लीज़ फॉरेनर्स से मिसबिहेव मत करे और डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब ना करे। तो सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक लोकल पीपल का माइंडसेट नहीं चेंज होता है इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। पुलिस ने तो इतनी बेरहमी से शायद मारा नहीं होगा, ये लगता है किसी लोकल्स का काम है। लोकल लोग जो है वो इकट्ठे होके ये गेस्ट हाउस वगैरह होटल्स में ये प्रेशर बना रहा है कि वो फॉरेनर्स से निकाल दे, फॉरेनर्स को निकाल दे। Очень все долго, потому что каждый хочет набрать побольше, один продавец, да, там
Я стою в очереди, потом начали индусы лезть, ну, то есть за мной стояли индусы, они что-то там на индусском говорят продавцу, типа, я так понял, типа, что ты тут этих белых обслуживаешь, давай-ка ко мне насыпай. Они начинают их обслуживать, то есть вне очереди, а минуя меня, я говорю, типа, а я как же тут? इसके Она बारे вообще में не कई सारे реагирует на फॉरेनर्स меня. बात कर रहे हैं. Мы знаем, что вас просто взяли и ночью выгнали из гостиницы. Что все-таки произошло? На самом деле, смотрите, какая произошла ситуация. Я приезжала очень поздно, и в гостинице, где я сейчас нахожусь, мне предупредили, что так поздно они меня не смогут принять, поэтому я должна найти что-то другое. Единственный вариант, который я нашла, это у своей знакомой, тоже девушка из Екатеринбурга. Она жила в гостинице напротив. Она сказала, что никаких проблем не будет, и можно будет заехать. Вот к ней я и заехала примерно в 10 часов вечера. Уже через полчаса начался огромный скандал. Вышло примерно человек 15-20 местных. Я не знаю, они то ли они живут при этой гостинице, то ли они там временно остановились, но это были индийцы. Они требовали, чтобы нас поскорее отсюда रात को एक लड़की убрали. को बस रास्ते में निकाल दो. Хозяин वो сказал, क्या я करेगी, ничего не कहाँ могу जाएगी, сделать, вы должны уехать. उसमें कोई И सिम्टम्स я, है कि и नहीं, वो девушка, कहाँ у से которой आई я है, कब आई остановилась, है, и еще वो несколько ज़रूरी भी, русских वो охранников, जानना भी которые ज़रूरी नहीं были समझा. в других номерах. Нас всех потребовали съехать именно в эту же, на ночь глядя, в 11 ночи. Вот, я его упросила хотя бы оставить на месте моих сограждан и ушла сама из этой гостиницы. А в штате Гоа ситуация сложнее намного. Мне передают друзья, что даже... Вы же ценные кадры, вас же в Болливуде с руками отрывали, даже не то что в массовку, не на главные роли, но в эпизоды. Поменялось сильное отношение местных к туристам? Опять же, это зависит от территории и от, так скажем, уровня образованности населения. Вот, скажем, в Южной Индии, возьмем штат Керала, например, там очень высокий процент образованных людей, там прекрасное отношение к туристам по-прежнему. Здесь, в Северной Индии, сложнее. Я знаю случаи, тоже друзья писали, находятся в соседнем городе, на них их обкидывали камнями. Зависит все тоже от уровня. Ну вот буквально только что был пример. Меня просили помочь, послужить, скажем, переводчиком. Там были граждане Чехии и Украины, их тоже выселяли из отеля. Я пришла, и сначала хозяева были категорически настроены. Говорят, мы не можем никого оставить, все, убирайтесь, вы тут находитесь уже на 2 дня больше. 40 минут мы с ними вели переговоры, в конечном итоге мы их просто упросили, мы объяснили, какая сложная ситуация. Они вошли в наше положение, поняли, что мы не можем покинуть страну. Более того, они даже сделали скидку в 50% на стоимость проживания. То есть люди разные на самом деле. Novel coronavirus disease spread can be stopped. Hello. Yeah, hello. So I just got your message. And so tell me a little bit like what kind of problems you are facing. And you are here with your family, I think, your children and... Yes. I'm here with my friend. She got 2 children and I have 1 son, because I'm growing my son alone. And also I have 2 puppies that we brought with us from abroad. So you are from Israel, right? Yes, I am from Israel. Okay. So now tell me what kind of problems you're facing, like in... Okay, I can... Excuse me. Yeah. Дети. Hello. Yeah. We are facing the problem. What is most concerning me is that violence that I can see here and there in point. It can turn into massive violence. I feel the stress between the locals and the tourists is going more and more. This morning I went to grocery shop where it the vegetable stall, and I was very early in the morning there, and I was the only foreigner at that time there, and quite many locals were there. They were all looking at me with such a hatred. Like tried to push me away, like they didn't let me place in their queue. You understand? And somehow I was laughing and didn't let it turn into violence. But I saw how it turned before in a bakery. Couple of people were crossing the queue, and there was not enough bread. It was coming out slower than people were joining the queue. And some people told the locals not to do that. And they were beaten with sticks in front of my eyes. People were standing in this queue for 2 hours, and some people didn't get the bread in the end. It is finished. And they were taking like big bags of bread
without waiting. You understand? Yes, yes. This is normal practice here, and it was always like that. That the local people are not waiting. Like it is not. It cannot continue. You know, this practice when there is not enough for everyone. So earlier also there was this queue breaking kind of thing, but this time because of the crisis, it's even more serious now. Yes, yes. It feels like it can turn into massive xenophobic. That's what I can tell you. And if it will not be stopped in this light form, it surely will go on and on. It will be more serious. Mm-hmm. So before something actually happens, you know, something serious, maybe better authorities need to take care of this. They have to clarify to the local, for the shoppers actually, for the shopkeepers, that they shouldn't serve the local people without a queue. They are the problem, because they made this habit, you know. Yeah. If they will sell just by the queue, then maybe the local people will not have anything to, you know, the buyers will not have anything. Also, I can tell you from my friend's mouth, okay, that in some places there was a supply of the government that was especially for like any region, for different regions in our village. They brought some vegetables in the government prices, okay? And there are people from the village that actually are responsible for that. So I can tell you, they first they gave to all the local people whatever they wanted, and the remains were given to the tourists. And the tourists are much more than the local people here. It was a help that was supposed to be given to everyone in equal way. But they just take it to themselves, and the last remains of these vegetables were given to the people. There are, in that area, there is about 40 tourists in that area, and maybe 10, 20 families of local people. And they gave them, to the 40 tourists, they gave 2 kilos of carrots for everyone together, you understand? And they took all the vegetables to themselves. Was the hatred always present there, or is it like after this lockdown situation this has increased? No, it increased very much. It was always discrimination, I can tell you, because always the local people never waited in queues here. But now it is leading to fighting, you understand? This is the problem, and it's going more and more serious, because local people like feeling they don't want to share with the tourists, you know? You're not part of our country like that. That's what they say. It's not your country. Go back to your country, like that. There was a news where it was saying that the Israelis were being evacuated from India, like have been evacuated from India. So did any... There was no actual evacuation. There is no actual evacuation. There are very expensive flights that they call evacuation. And that's it. And they are going only from Mumbai and Delhi. So no message. But I've contacted the embassy. I've contacted the embassy, and they registered me as I'm here. And there is no possibility to fly on these expensive flights with dogs also. So I'm basically stuck here for now. And evacuation means something different. It's free flights. This is evacuation. Yeah. And many people, many countries speaking about evacuation. I know only Kazakhstan have sent actual free flights to Goa to evacuate the people, and the others paying double and triple price of the normal flight. And I can tell you, these flights, I saw the video. I can forward you the video from yesterday's flight to Moscow from Goa. It's more than half empty because the price is very high. It's about $1,000, and some people pay even higher. And so by the time... Yes, also the prices, you can see that they are charged normal price, and the tourists are charged triple price here. So the tourists are paying a lot more, like 3 times the price, original price. Exactly 3 times the price, yes. In the beginning it was double price, and now it is triple. Got it. And there is no message from the government about like solving this problem or something? I don't know exactly how the government is talking to the people here. You can see online many different messages, but it doesn't seem that the local people care, you know, about that. Like, for example,
I saw the message from the government to the house owners not to demand that rent in advance. And Yeah. still my owner is demanding that rent, you know. Got it. I'm still in negotiating with her. I'm telling her, we don't know how long we're going to stay here, so why you want to pay us in advance? Yeah, got it. And also, so your hotel owner is okay with you, but there are cases where like the hotels are saying the foreigners to evacuate the hotel, right? Yeah, there are many cases like that, but I heard that police is helpful in these cases. If the person is going to the police, they force the house owner to keep that. And yeah, I think Just people are scared to ask police help in these cases because it was never helpful before, you understand? If anything happened, they always would accuse the tourist. so in my channel there are a lot of subscribers, and I hope that this matter escalates to the Ministry of Tourism and other government bodies, so that finally any action can be taken, because this is really serious. Earlier also I had a problem, we could solve it, took very quick action, and I didn't actually expect this from Goa. I think I always thought that Goa is a tourist place and there are so many tourists. I think the relation was always good with the tourists there, but for the first time I'm listening these kind of problems from Goa. In Goa, nobody cares for the tourists. They're just exploiting the money and that's it. They don't care for nothing. People in Goa don't have such a culture of accommodation like in other parts of India. I know India very well. I'm traveling in India since many years. And in atmosphere was always better in other parts of India than in Goa. Yeah, I also heard other people from Rishikesh, and they were like especially when talking about Christian local people. The like comparing to Hindu, I can tell you the Christian are not very much, don't have such a high culture of communication, and they are quite easily they are using violence for their needs. Comparing to the Hindu population, that's my own experience. I don't know if this is how much it is statistical. That's the thing. Okay, so I really hope that this matter escalates, and my subscribers are really helpful for that, and we are trying our best to give the best experience to the tourists in this time of need, so that they don't face any problem, and like they don't have any bad impression. But some people are like really going crazy and being very, I think this is the time where you should actually stay calm and show the tourists that we really care. But somehow some ignorance, they think any white people and foreigner, that means they're corona carriers. But also the underlying discrimination was also there, as you said, and I think we should act on that, so that because ultimately these locals, they are thriving on the money of like tourists only. Okay, so let's see. I think I and my subscribers can act on this and finally make a solution for this. Thank you very much, Samrat. Thank you. Thank you for understanding. Yeah, it's still early to say thank you. I think it will be better if you say thank you after we have finally solved the problem. But anyway, I appreciate. Then it will be great. Thank you. Understanding is also a lot. Actually, understanding is also a lot. Of course, yeah. I'm trying my best so that we can, like, India has many good things, and we are trying the best to keep the good things, and like we are trying to fight the bad things, so that the foreigners. I'm one of India lovers, I can tell you. I'm one of India big lovers. I know many things about India. I know it for a long time. And still I love it despite the problems there are. I think it's a magical place. Yeah, it's very magical, and actually, very glad to hear that, and also it's mostly very, very tolerant. Mostly it's very, very tolerant, much more than most of the countries which I've visited. Right. Okay, so I like, it's really nice to hear that, and also very painful to hear about your problem. So don't worry, we will act on this and solve your problem. Okay, take care of yourself. Sure.